Hi, this is Utkarsh Bhargav. Welcome to another amazing episode of Daily Market Analysis. Now, today Nifty has managed to give us a fresh all-time high. In fact, आज अगर आप देखेंगे तो 15,900 भी एक बहुत short period of time के लिए टेस्ट हो चुका था. And this has happened without the help of Reliance or HDFC. Both have underperformed for the day. Now, if you'll see today, we discussed this even yesterday also that this expiry we might see 16,000 coming. We might because रिलायंस और HDFC जैसे पावर स्टॉक्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वो मूव करेंगे तो हमें इंडेक्स हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स हमको 16,000 टच करता हुआ दिखेगा. अदरवाइज the expiry can be below 16,000. That's what I can sense as of now. And if you look at Bank Nifty traded in a very small range today. Bank Nifty, in fact, both the indexes actually did not give a huge opportunity to the option buyers to make good positions. Again, it was a consolidation sort of day and आज का दिन ज़्यादा फेवरेबल अगेन वैसा ही था जैसे पिछले कई दिन जा रहे हैं ऑप्शन सेलर्स के लिए ज़्यादा फेवरेबल या फिर उन लोगों के लिए ऑप्शन बाइंग में जो स्कैल्पिंग ज़्यादा करते हैं जो इजीली स्कैल्पिंग से पैसा बनाना जानते हैं. सो if you will see today, Nifty Media and Nifty Reality were the best performing sectors for the day, and the best part about today was out of 8 stocks, 7 stocks hit our targets today. These are all the stocks that came into our custom scanner, and we managed to book really good profits today. Now, if you'll see, I'll explain you everything. How did we manage to? What were the stocks in which we managed to book these good profits? And specifically, I would like to tell you about Gujarat Gas and JK Paper. These two stocks actually flew away and we were able to book amazing profits in these two stocks. Now, other than that, we can see that Asian Paints was also on fire. It came out to be as a top gainer for the Nifty 50 index, and we have been discussing about Coal India for a while. Coal India was doing well from our past few trading sessions, but today it fell 1.38%, and the main reason was that the profit expectations were much higher in comparison to what it came out to be actually. So the result was there, and as I've discussed that if we want to, if Nifty has to expire above 16,000, Reliance and HDFC have to really start moving. Otherwise, क्या होने वाला है मुझे जो what I can sense is that एक consolidation अभी रह सकता है from 15,700 levels to 16,000 और 15,000 in fact 900-950 लेवल्स के बीच में कंसोलिडेशन हो सकता है. नाउ कल की अगर हम बात करें, कल कोई भी मेजर इवेंट नहीं है एज सच मार्केट के अंदर. इनफैक्ट ग्लोबल इवेंट की बात करें तो यूएस फेड्स मीटिंग इज आल्सो प्लान्ड फॉर Thursday. So in general, tomorrow there might be a possibility that we can again see some strong consolidation and not a very trending day. That is a possibility. But if there's any change, I'll update you all the important levels on the as soon as the market opens tomorrow. And a lot of stock specific focus is there at the TMT Club, the Millionaire Trader Club. If you don't know what the Millionaire Trader Club is, let me tell you quickly before we move ahead and analyze about today's session, and we'll also see कल क्या होने के chances हैं. But let me quickly tell you about the Millionaire Trader Club. So it is a place, it is an exclusive Discord server where all the like-minded traders who are willing to learn and actually grow their knowledge and their wealth with trading are coming together at a place, and सभी ट्रेडर्स साथ में मिलके डिस्कशन करके अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं और साथ में मेरे साथ या रोलिंग बुल्स के बाकी मेंटर्स के साथ अपने सेटअप्स को शेयर करते हैं और हम उनके साथ सेटअप शेयर करते हैं विथ लॉजिक, सो दैट we can actually learn in the live market how and when and what is happening, because trading is not just buying and selling. Trading is a lot about psychology. So most of the time a trader cannot control his or her psychology, and that is the biggest reason for failure in the stock market. And yes, as an option buyer, you need less capital to enter into any trade, but what happens is that you exhaust all that capital just because you need less capital. So अगर आप ऑप्शन बाइंग करके पैसा बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, but you need to stay cautious because the market is trending only 30% of the days throughout the year. 70% of the days the market is flat and sideways. So what to do in those 70% of the days? And ये किसने कहा कि उन बाकी 30% डेज में भी आप जो सोच रहे हैं वही सही होगा? सो व्हाट टू डू ऑल अबाउट इट?
there we come into the picture, there we come into as a support system for you, and we make sure that there's a systematic set of rules and strategies जिनके बेसिस पे हमारे स्टॉक्स हम स्कैन करते हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत से लोग अलग अलग स्ट्रैटेजीज के बेस पे स्टॉक्स को स्कैन करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि किसी की स्ट्रैटेजी सही है या किसी की स्ट्रैटेजी गलत है। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट our strategy works for us and we are glad and proud to share our scanners with our members. So if you want to become a part of the Millionaire Trader Club, we would be more than happy to have you on board. Description में link आपको मिल जाएगी, जरूर एक बार कोशिश करें ज्वाइन करने की। I think you are going to like the whole experience of being a part of this amazing club. Just after 3 months, the initial membership is of 3 months, and just after 3 months you'll realize how wonderful it is to become a part of such amazing community of empowered traders. So enough of the promotion, enough of the Millionaire Trader Club promotion. I hope to see you on board the Millionaire Trader Club, and before moving ahead, it's a simple request: just go and hit the subscribe button and the bell notification icon so that you won't miss any single update of daily analysis video or of any free masterclass that we post for you. Okay, so let's move ahead into the video and we'll analyze and summarize everything that happened into the markets today and what are the possible levels of trading for tomorrow's trading session. So this is Pratksh Bhargav. You're watching Roaring Bulls, the stock market show. Okay, so this is how our trading session looked like for the day. We took 7 out of 8 stocks hit our target. Tata Chemical went amazing. In fact, Tata Chemical levels I shared with the with all the general members as well on the Telegram. Then there was I shared that on Instagram as well. If you have not followed us on Instagram, you can go and follow there. Then there was this amazing stock JK Paper. It went to give us huge returns for the day. इन सभी के चार्ट्स आप जाके चेक कर सकते हैं. यू विल बी अमेज्ड टू सी हाउ वंडरफुल दे वर. आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू इन अ व्हाइल. देन देयर वाज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस वेयर वी मेड अ मैनुअल एग्जिट विद स्मॉल प्रॉफिट्स बिकॉज it was kind of a sideways day for that, and Gujarat Gas gave us huge returns for the day. Adani Ports took a small U-turn from the support of 50 EMA, and we were able to book 10 or 15 points in Adani Ports, but that was pretty much fine for the day. Then MRPL was amazing. It gave us good, MRPL actually did hit a stop loss for the day. Sorry, KRBL was amazing. It did give us good returns for the day. And MRPL actually gave us good returns for the day. I forgot to put up a tick mark over here. Then Fortis did hit our stop loss. So in Fortis we did hit our stop loss. We had a selling position in Fortis, but then the stock reversed. And Mphasis, we had a good target and we were able to book good profits. So let's start with Mphasis. As of now, if you can see here, here is Mphasis, and this was our position in Mphasis. Can you see that? This is a position we shared with the Millionaire Trader Club members, that this is a good buy above this particular level if we get a breakout, and after the breakout it completely went to hit our target. So that was a very good stock today. Other than that, Tata Chemical. So Tata Chemical was also very good today. Can you see it very clearly? We mentioned it is a good buy above 744. This was the level 744, और उसके ब्रेकआउट के बाद इजीली नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस था वो हिट हुआ और हमें पूरा टारगेट मिला. नॉट जस्ट वंस बट इनफैक्ट ट्वाइस. अगर किसी ने यहाँ एंट्री ली हो तो भी और यहाँ एंट्री ली हो तो भी टारगेट मिला. ओके, सो after that we can see JK Paper was amazing. Actually JK Paper में मैंने personally entry ली थी, but after this sideways momentum and this small resistance from this pivot point, I booked my profit here. But there were some members from the Millionaire Trader Club, those actually said that they were holding on to the trade because it did not hit a stop loss. So they were holding on to the trade, and just look, after the breakout of this 175 resistance, it straight away went to give a huge move of close to 6 to 7 points, and it did hit the resistance 3 of pivot points, giving us good return on investment for the day. So that was amazing. Other than that, Gujarat, let's just open this one second. Yeah, Gujarat Gas Limited. Can you see how beautiful it was? It was such an amazing trade today in Gujarat Gas. 632 was the level of resistance that we were looking forward to break, and once that resistance was broken, can you see it was such a phenomenal move from 632 to 655.
amazing move to capture. Gujarat Gas was literally on fire today. So other than that, Adani Ports में आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ Adani Ports में हमने अपनी पोजीशन कब ली थी. So Adani Ports right from the start it started filling and it took support at our previous level of 755. 755 पे हमारा लेवल मार्क था. हिस्टोरिकल सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है आपको यहाँ समझ में आएगा. 755 पे जाके जब सपोर्ट लिया तो यहाँ पे मुझे दिखा एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस. एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस मींस दैट देयर आर मल्टीपल कंफर्मेशंस अवेलेबल that I can go either bullish or bearish in certain trades. So यहाँ पे area of confluence में क्या था? Number one is that there was historical support and number two was that there is a support of 50 EMA जो white line आपको आती हुई दिख रही है. That is a support of 50 EMA. So I built a bullish position around 762 and we then trailed the targets to 770 and 775 and then we made an exit over here. Just this small momentum because it was not a complete U-turn, but definitely we were trailing our targets using a simple 50 EMA. Okay, so this is how Adani Ports was for the day. Other than that, MRPL. Okay, MRPL. Just look, MRPL. Let me actually remove a few indicators from here. So pivot points I'll remove. Yeah, fine. It looks much cleaner now. So it was clearly mentioned that MRPL is a good buy. Mangalore Refineries is a good buy above 53. And can you see the 53 resistance over here? 53 के बाद हमारा टारगेट सिर्फ 54.3 था, but we got very good momentum even till 55. 55 was the next resistance available. So this is amazing to see. Mangalore Refineries gave us good returns for the day. After that, KRBL was there. So KRBL, can you see that? Can you just see that? This was a trade setup in KRBL. So we had to enter at the breakout of 233 and just look at the kind of momentum we got. And in fact, for anyone who in fact entered at this place, उसके बाद भी कोई stop loss नहीं hit हुआ and we were able to capture this amazing momentum from 233 to 242, 243 levels. So it was amazing in KRBL as well. उसके बाद हमारे पास है Mphasis again. Can you see कितना beautifully target book किया है हमने? Mphasis was a good buy above 2037 and we waited for a confirmation candle and we got it right here. After this confirmation candle, we were able to capture this whole thing in Mphasis and it was amazing to see. थोड़ा सा consolidation यहाँ पे था, but उसके बाद काफी strong move आया. क्यों आया उसको भी समझने की कोशिश करेगा. मैं एक बार आपके साथ ये चीज बता चुका हूं. आपको एक मास्टर क्लास के अंदर कैंडलस्टिक की मास्टर क्लास में आपके लिए फ्री मास्टर क्लास कंडक्ट कर चुका हूं एक बार. Can you see a lot of long wick candles over here? So long wick candles from the bottom actually signify what? They signify buyer pressure. Okay, so buyer pressure was there and we were able to hold on to the trade and we kept going for this thing. Okay, now after that what else do we have? So Fortis में हमारा टारगेट जो था वो selling target tha. We wanted to short Fortis and we got an entry over here. 232 के नीचे हमारी entry थी, but stock reversed from 231 and it actually did not hit our stop loss entirely, but it reversed so much. So we did made a manual exit over here and we did lose a little money in Fortis today. Okay, after that there was MFSL. Okay, so Max Financial Services, there was a good resistance over here that broke out with good volume, but there was no movement in the stock at the last moment. So this is how our setup for the day looked like for the Millionaire Trader Club. ये सारी चीजें देख के आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हम ट्रेड सेटअप्स बनाते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले. ओके, so other than that, let's look at Nifty's option chain as of now. Nifty के ऑप्शन बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम देख रहे हैं इस समय. बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे 17th of June एक्सपायरी, just 2 more days to the expiry and just look the kind of support 35,000 has. 35,000 has a strong support and a mild, mild call side OI and a lot of good put side OI. So this is 35,000 can act as a good support. That's what I can say. And resistance की अगर हम बात करें तो 35,500 कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और आज भी कर रहा हूँ, एक strong resistance है. तो हमें 35,500 को entirely ignore नहीं करना है. इनफैक्ट हमें अगर बैंक निफ्टी में बुलिश जाना है तो हमें 35,500 को ब्रेक होने का वेट करना चाहिए एज पर द ऑप्शन चेन. सो लेट्स जस्ट गो हेयर एंड लुक एट द इंडेक्स, bank nifty index as of now, and let's start and look at the index. So yeah, this is how bank nifty index was looking. Can you see a very clear downtrend from a past few days?
मैंने आपके साथ ये लेवल डिस्कस किया था कि ये एक जो जोन है ये हमारा इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स बैंक निफ्टी इंडेक्स रेजिस्टेंस फेस करके आ चुका है और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन बड़े स्ट्रांगली रिस्पेक्ट हो रही है और लगातार इस ट्रेंड लाइन पे इंडेक्स हॉल्ट कर रहा है। आज भी ऑलमोस्ट वही हुआ, इसी जगह पे जाके इंडेक्स ने हॉल्ट किया है और इसीलिए कोई खास मतलब नहीं था इंडेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिश होने का, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे है और एक मेजर सपोर्ट एरिया यहाँ पे है, उसके बीच में ही इंडेक्स फंसा हुआ है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट कुछ आ नहीं पा रहा है इंडेक्स के अंदर। अगर आज के दिन की बात करेंगे, देखिए आज के दिन को थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं हम, ये रहा हमारा आज का दिन। कैन यू सी दैट? सो दिस इज हाउ टुडेज ट्रेडिंग सेशन वाज लुकिंग। सो कैन यू सी इट वेरी क्लियरली? एक्चुअली पहले 15 मिनट के अंदर जो मूव आया उसके बाद देयर वाज नो ह्यूज मूव्स ऑन ईदर साइड इन बैंक निफ्टी। इट वाज काइंड ऑफ अ कंसोलिडेटिंग डे फॉर बैंक निफ्टी। अगेन 50 EMA से एक बार दो बार सपोर्ट लेके इंडेक्स में ऊपर जाने की कोशिश करी, बट 15,300 वाज स्टिल देयर। मैं मल्टीपल टाइम्स ये चीज शेयर कर चुका था मिलियनेयर ट्रेडर क्लब मेंबर्स के साथ भी और जनरल टेलीग्राम पे भी कि 15,310 से पहले हमें बुलिश होने की कोई जरूरत नहीं है बैंक निफ्टी पे। एंड इनफैक्ट 15,310 एक्चुअली नेवर केम प्रॉपरली। सो it was a useless day in Bank Nifty for an option buyer as of now, as I can say. Just in case अगर आप levels को बहुत strictly follow कर रहे हैं और आपके पास scalping करने की capacity है, you can be that good of a quick trader. तो मैंने कुछ members को आज देखा scalping करते हुए। They actually scalped the opportunities. They bought Bank Nifty at this level, sold at this level, then ये sold at this level, bought back at this level, again bought at this level, sold at this level. तो इतना कर पाए हैं कुछ लोग, but again I am not a very big fan of scalping. So anyways, we traded in equities for the day. Now what are the possibilities for tomorrow's trading session? So can you see that? Let me actually delete this first. Okay, so can you see that for tomorrow's trading session I am still I'll still wait for this trend line to break first of all, and then after that there are multiple resistances. So there is R1 35,445 and then there is R2 that is 35,579 and this is a major रेजिस्टेंस एरिया दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग। सो इसको आपको भूलना नहीं है, 35,715 से लेके 35,800 तक का। ओके, सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट अभी भी 35,000 के लेवल पे अच्छा सपोर्ट है। ओके, सो दिस इज अ गुड सपोर्ट, 35,000 इज अ डिसेंट सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना है ये समझ लीजिए एक बार। अगर ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 34,649 या फिर उससे भी नीचे गया तो सपोर्ट टू 34,411। दैट इज द मैक्सिमम दैट यू शुड एक्सपेक्ट। इससे नीचे जाने की उम्मीद अभी ना करें, इट कैन बिकम अ रिस्की। ओके, तो बेरिश कब होना है आपको? अगर हमारा 34,944 का सपोर्ट टूटता है तो आप बेरिश हो सकते हैं 34,649 तक के लिए मे बी, बट दैट पॉसिबिलिटी इज अ लिटिल लेस। आई फील दैट मार्केट अगर नीचे खुलेगा तो हल्का सा रिट्रेस करके कंसोलिडेट करेगा और अगर ऊपर खुलेगा तो हो सकता है नीचे आके फिर कंसोलिडेट करे। दैट इज अ हायर पॉसिबिलिटी दैट आई सी फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन, बट अगेन it can change. Let's go to Nifty and analyze how Nifty go to Nifty. So yeah, Nifty is here. एक important resistance area जो था यहाँ पे ये बड़े ही beautifully breakout हो चुका है, वो भी gap के साथ। Now there is one small problem. What is the problem? The problem is the gap that has been created. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे आपको जो गैप दिख रहा है, आई एम अफ्रेड दिस गैप विल गेट फिल्ड अप। ठीक है, जब भी कभी गैप दिखता है वो फिल होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब ये जो गैप है अगर ये फिल होने की कोशिश करेगा तो क्या होने के चांसेस हैं इसको आप समझिएगा। हो सकता है आपको इंडेक्स नीचे आके इस जोन पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता हुआ दिखे। दैट इज वन पॉसिबिलिटी, और एल्स द इंडेक्स कैन इवन कंसोलिडेट इन दिस एरिया। ओके, सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन नॉट इग्नोर। ओके, नाउ let's just see what happened in the index. Actually nothing happened in the index today. It's a strong consolidation in a very small range. That's kind of a useless day for option buyers, तो हमें ज़्यादा बात ही नहीं करनी उस बारे में। ऑप्शन सेलर्स के लिए अमेजिंग डे था। So anyways, let's directly talk about the resistance and the support areas. तो मैंने आपको ये बता दिया है, आपका strong support जो इंडेक्स को मिलेगा वो रहेगा this particular zone। ठीक है, this particular zone. So let me see, 15,774 is going to be your strong support for the index and 15,900 is still a good resistance. Okay, इसके ऊपर resistance क्या रहेगा? That is open, that we have to see in the live market, because again it's a
ऑल टाइम हाई, सो वील हैव टू वेट एंड वॉच. ओके, सो आपके साथ मैंने निफ्टी के रेजिस्टेंस और बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट्स की पूरी बात कर ली है. जस्ट इन केस इफ यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज कस्टम स्कैनर्स एंड लर्न हाउ दे एक्चुअली वर्क, you are most welcome to become a part of the Millionaire Trader Club, because you'll get to learn a lot over there, and you'll actually get to trade with like-minded people who are there to learn and get empowered. So that's all for today from my side. I hope you'll subscribe to the channel, and I hope that you'll learn a lot on the way with us, because we post daily analysis videos just for you, so that you can actually mark down these levels on your charts. और मेरा आपसे ये चैलेंज है, 10 दिन के लिए इन लेवल्स को मार्क करिए और उन लेवल्स को फॉलो करके देखिए. यू आर गोइंग टू सी अमेजिंग डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग स्टाइल. Just mark down the levels of support and resistance, and actually you will be able to make good return on your investment from the markets. I am saying that good return on your investment because बहुत से लोग मार्केट के अंदर 10,000 के 1 लाख बनाने और 1 लाख के 10 लाख बनाने आते हैं. मार्केट इज नॉट गोइंग टू डू दैट फॉर यू. 10,000 के 11,000 बनना फिर भी पॉसिबल है, बट 10,000 के 1 लाख बनना सेम डे इम्पॉसिबल है. ओके, तो अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके मार्केट में आ रहे हैं, आई विल से दैट स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज मार्केट इज गोइंग टू टेक अवे ऑल योर मनी एंड यू विल बी लेफ्ट विथ नथिंग. सो अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है और आप मार्केट के अंदर आके ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, आई विल इंसिस्ट यू that learn how to trade first learn and then think about earning. Okay, so that is my suggestion to you, and I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया हो तो इसको अपने ट्रेडर फैमिली मेंबर्स, ट्रेडर फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको अवेयरनेस मिले इस चीज़ की कि ट्रेडिंग में कितना पोटेंशियल है, पर सही से करा जाए तो यू कैन बी एन ऑप्शन बायर, यू कैन बी एन ऑप्शन सेलर, यू कैन डू एनीथिंग इन द मार्केट एंड स्टिल विन. बट इट्स जस्ट दैट अगर आप abruptly trade करेंगे without any psychological mindset or without any proper strategy, you're never going to win in the markets, that's for sure. Okay, so I hope you enjoyed this video. Don't forget to give this video a thumbs up, and कोई भी आपका comment या thought हो तो आप नीचे comment section में जाके बता सकते हैं. I'll love to hear your suggestions, your thoughts, and let's create and let's build a great family of like-minded traders, and let's grow this amazing community of Roaring Bulls to a whole another level. So I hope you enjoyed this video. Thank you for listening to me. This is from Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show.